Okay, now tell me, you like this side or you want me to improve little bit this side? English or Hindi? Hindi is better. तो आप देखो, आपको फेशियल ये सिमेट्री है, तो अगर जब से स्ट्रेट देखेंगे, चिन थोड़ा ऐसा हट गया है, ये पूरा अंदर है, ये थोड़ा बाहर है, तो चिन में थोड़ा सर्जरी करके सीधा करना पड़ेगा, यहाँ पे बाहर लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही रख सकते हैं, या आपको चाहिए तो थोड़ा अंदर भी ले जा सकते हैं, आपको कौन सा पसंद आएगा? मेरे को पूछो तो थोड़ा सा अंदर लेके जाना है, यहाँ पे काफी बाहर लेके आना है और इसको सीधा करना है। ये जो बाहर लेके आना कैसे होगा? तो उसको दो तरीके से हो सकता है। एक आपको हड्डी को स्लाइस करके रोटेट कर सकते हैं, और दूसरा है फॉरेन मटेरियल, लाइक आर्टिफिशियल मटेरियल ऊपर लगा, तो हड्डी लगा सकते हैं। हड्डी लगा मतलब फेस का हड्डी फेस का हड्डी लगेगा, नहीं तो रिब का हड्डी निकालेंगे, किसी और का हड्डी निकालना पड़ेगा। वो कहाँ का हड्डी लगेगा वो मेरे को स्कैन में ही मालूम पड़ेगा, कितना चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज अगर आपका वो डिफेक्ट ज़्यादा है, देखने में मेरे को भी ज़्यादा लग रहा है, स्कैन में मेजरमेंट होगा, अब बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, उतना हड्डी मेरे को फेस में कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो आर्टिफिशियल मटेरियल के लिए जाना पड़ेगा। ऑप्शन ऐसे ही है, नहीं तो कहीं और से निकालना पड़ेगा हड्डी बॉडी से, यही होता है ऑप्शन, 3 ऑप्शन ही है। आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, मतलब वो नहीं चाहिए, बट एक फेस से नहीं होगा कि मतलब, क्योंकि मैं बाद में फिर वो रिमूव करना चाहता था कि एटलीस्ट 6 महीने 1 साल के बाद। तो मैं क्या रिमूव करना चाहते हो आप? जो स्क्रू प्लेट जो भी है, क्योंकि आप बोले थे ना कि बोन ग्रो करता है, तो बोन अगर सही हो जाएगा तो मैं रिमूव कर दूंगा। लेकिन फिर अगर ऐसा प्लान होगा तो शायद मुश्किल होता है ऐसे, बिकॉज मैं आपको स्कैन में देखिए बता पाऊंगा, अगर ज़्यादा इश्यू है तो मैंने ऐसा हो नहीं पाता, मुमकिन नहीं है। फिर भी मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। आपका नाम क्या है? यहाँ पे क्या आपका मनीष? अरे इनका कहाँ पे है यार स्कैन? सर स्कैन नहीं करा, स्कैन कर लेना, कुछ चीज़ वही कंफर्म करना चाहता हूँ सर। स्कैन के बिना नहीं हो पाएगा, मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा आपको। 3 ऑप्शन है, बोल दिया आपको 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन फॉरेन मटेरियल वहाँ पे, दूसरा ऑप्शन दूसरा बॉडी का हड्डी, पाँव या रिब का, तीसरा ऑप्शन ये ग्रो नहीं करेगा ना पाँव? ग्रो करेगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, आपने किसी वीडियो में बोला था कि रिब का हड्डी वो वहाँ पे ग्रो नहीं होगा, बट पैर पे ग्रो करता है। नहीं, जहाँ से निकालेंगे वो वहाँ से चला जाता है, फिर वापस नहीं आता, लेकिन आपको उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ज़्यादा क्वांटिटी में से थोड़ा निकाल के लेते हैं। सर वो डिफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मैं शिप पे करता हूँ तो मेडिकल में डिफेक्ट आ जाएगा कहीं और से, अगर कुछ भी कटिंग वगैरह हुआ तो। नहीं, ऊपर से उनको दिखता नहीं है, छोटा सा लाइन दिखेगा, दाग, क्योंकि वो पूरा फुल बॉडी चेकअप करता है, उसमें उनको मालूम नहीं पड़ता, थोड़ा दाग लगेगा ऊपर, वो सोचेंगे कहीं गिर गया, बस वो भी दिखता नहीं है। आप स्कैन ले लो तो मैं आपको बेस्ट आइडिया बताता हूँ क्या होता है, बिकॉज ना अभी मेरे को मालूम ही पड़ना है यहाँ पे डिफेक्ट कितना है। अभी प्रॉब्लम इसलिए हो गई, च्यूइंग में इस साइड से करता रहता था, इसलिए इस साइड में थोड़ा ये हो गया। नहीं, उसकी वजह से नहीं है, अंदर आपका हड्डी में प्रॉब्लम है। जब आप स्कैन निकालोगे मैं आपको बता दूंगा। इनका स्कैन ले लो, आप पहले जाके स्कैन ले लो, तब मैं आपको सारा डिटेल बता पाऊंगा और क्लियरली अच्छी तरह से। और ये सब जो अभी जो लूज वगैरह है टाइट, वो टाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे थोड़ा मतलब वो चीज़ल वाला जैसे एंगुलर होता है, लाइक उसके लिए तो आपको फिर पक्का आर्टिफिशियली जाना पड़ेगा। ये चिजल विजल इतना फाइन वो दूसरे हड्डी से नहीं बन पाता। सिमेट्री हो जाएगा, सिमेट्री हो पाएगा, हाँ, थोड़ा 90% सिमेट्री हो पाएगा आर्टिफिशियल के बिना। आपको चिजल चाहिए, ये चाहिए परफेक्ट, ये वो, मतलब आर्टिफिशियली बनना पड़ेगा। सिमेट्रिक हो जाएगा, हाँ, सिमेट्रिक हो जाएगा। आप पहले स्कैन निकालो, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इनका स्कैन निकालो, फिर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल बता पाऊंगा। हाँ, स्ट्रेट,
So I might be able to do without the rib or the artificial material. We can increase here by 5 millimeters, which means this much. Okay. And here I can increase it a little bit more, and here we can reduce 5 millimeters, so it balances out. And if you see here, this is a little bit protruding. Yes. This is inside, so I can rotate the chin like this. Okay. A little bit we can do that. Should be possible. So it will be a type of orthognathic surgery, or we call it orthomorphic jaw surgery. It's possible for you. And there, So we will not take anything. No rib, no foreign material. Just move. You'll have plates. You'll have maybe 2 screws or 2 plates and 1 screw, something like this. that will. That if you want, you can remove after 6 months. If you want, Yes, I want to remove that. that's no problem. Done. We can do this. So, When you want, you can come, or we can do it even this time. Up to you. yes, this time only I can. Yeah, we can do. I already before 2020 I sent you message from 2022 till now. We can do now. You can talk to my executive. Today we cannot do, Okay. but if you're okay, then we can do the planning and everything for tomorrow. Said I want to know something. They have because of my loose skin, they have something like if I smile, they But have then- something fat is there. Then I have to remove, tighten it here, tighten it here. That will be extra procedure. This procedure, what I'm suggesting now, we'll do surgery from here to here. I will be cutting the jaw and moving it like this. Okay. So everything gets tighter and gets symmetrical. That's all we are doing. Symmetry. Right? Symmetry you will get. Okay. And they have possible to jaw. Yeah, we will do the chin also, same time. Okay. But nothing on the upper. No need. Well, I don't think you need. Only do this and see. I think it's enough. Yes, I want just Because see, this itself is a major surgery. Okay. I will need 2-3 hours. You will need quite some time to recover, 5 days, 7 days, like that. The total healing will be 2 weeks. So enough. So after 1 month, I will be. Yeah. After 1 month, after 3 weeks, you'll be fine. Okay. They have some restriction is there for running and all that. For running restriction, maybe 3 weeks. Then Exercise, swimming, all restriction for 3 weeks. After that, After that, all normal, you can do everything. Nobody will know what we have done. All will be done from inside the mouth. No scar, nothing. Only if you take a scan, they'll find some plates and screws. that's why I want to remove after 6 months. That we can do after 6 months. After this one, this will be tight something because. Upper won't become much tight. Because upper we're not doing. No, lower will become tight. Upper tight, you should do something here then by the nose. No. We can do Nagerplasty. We cannot make tight. But this one will make a symmetry. Yeah, it will be good. Only do this. I have this one. This side it will be okay, but from this side. Yeah, I know. Uh, Very flat. We'll make it better. Sure. That's what is possible in your case on the scan. Okay. So you go with them. They will tell you all the detail for. What are the things I need for this? You just suggest me, sir. Because we are doing this job and this one. Anything because of buccal fat and. No need. No need buccal pad fat. No. See, we are trying to solve your main problem. That's it. Asymmetry, and it is involving till this much, no? So it's like a big procedure. So don't have to do anything else. And after this, anyway, you're wanting after 6 months the plate and screw to be removed. At that time, if you feel, we can do some more things. Okay. Why do now? Many patients are happy, don't do. You think, okay, doctor, I'm looking better, I want some more improvement, make my cheek tighter or something, you feel, we can do that. Now, I'm saying no need to do. Sir, now the asymmetric. Will be corrected. 100%. Yes. And I came here only alone, sir. That's okay. I came from Haldia. That's okay. We can do this alone, no problem. You're more than 21 years old. Yes, sir. We can do it. Alone is not a problem. I'm scared about the injection and all that. Very much scared. What to do about that now?
Because It's normal to be scared, but not to be worried. Nothing will happen. But we have to do all that. when I saw anesthesia and I'm scared about after that I wake up or not. Like, You will wake up. Don't worry, such things. So we've just given anesthesia. We haven't prepped him. So this part of the face is sunken in. I'm not going to be using any foreign material there. We're going to be splitting the mandible there and moving it sagittally such that he gets a similar kind of fullness that he has here. So we're going to do it about for 6 millimeters. That's our plan. Slight deviation in the chin. So we're going to get that also fixed at the same time. We're going to do this all inside the mouth. That's a correction. No artificial material used. We've moved the jaw, the lower part, by 7 millimeters laterally and about 6 millimeters in the forward dimension. Only the side which was shrunken or which was of the lesser dimension. So it's an asymmetric osteotomy that we've done. Let me show you some other view also of this patient. Front view so you can appreciate again. Look at that. Very clearly the asymmetry is there in this view. And that's the correction. You can see how it's got fuller on the left side now, while it wasn't when we started. We've not done fat injections. There are issues with the lower jaw, so we've corrected that. And this is for life. Day 7 following an orthomorphic surgery performed by Dr. Richardson, and today he is scheduled for a splint removal or a Genioplasty removal. थोड़ा पेन होगा, मैं गीला कर रहा थोड़ा. So since the beard grows back and there's hair in this area, patients will have a lot of pain. ठीक है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ. Yeah, you're going to have little pain. खुद करोगे? नहीं, beard है. उस साइड से करते. एक मिनट, सिस्टर पन्ना देंगे अंदर से. एक मिनट, बस हो गया, आधा हो गया. Beard. धीरे करोगे तो और दर्द होएगा. बस यही मेन है. हाँ, हो गया बाबा, वेरी गुड. Last. Okay, fine. Bas last. सीधा देखिए. Alright. So what we've done for him is a facial asymmetry correction. As you can see, if we come here. So on the left side, he had severe asymmetry. His face was completely hollow. And what we've done is an orthomorphic surgery, that is just the lower segment of the mandible, the lower border, has been tilted in such a way and plated. It's fixed with plates and screws in such a way that it does not, such that it does correct the asymmetry that he had on the left side. There is still a lot of swelling that he has
it will subside in due course of 10 days or so. But for 1 month, this patient needs to be on a soft diet. For the first 5 days, he was told to have liquid and very soft solids. But now he started. आपने soft खाना चालू किया है ना? नहीं किया? अभी भी liquid कर. आज से आप खा सकते हो. But otherwise his intraoral sutures, so the entire surgery was done intraorally. All the sutures are intact, there's no collection, there's nothing, everything's clear in the intraoral field. And we'll just take a scan. Now we'll show you कि क्या मतलब पहले कैसा था बोन और अब कैसा है. जब अंदर से जो एसिमेट्री करेक्शन हो गया है वो बाहर दिखने को, जैसे ये स्वेलिंग कम होगा और आपको अच्छा दिखेगा. अभी भी एकदम बारीकी से देखो तो थोड़ा मतलब एसिमेट्री है, अभी भी है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ स्वेलिंग इधर उधर. यू कैन नॉट टेल 100% की फाइनल रिजल्ट क्या होगा, पर ऑन द CT स्कैन यू कैन टेल कि ओके ये सही है. तो अभी हम आपका स्कैन लेंगे. उसके बाद आप फिर ये हम क्लीन करके फिर आपको भेजेंगे. ठीक है.